माता इंग्लिश मीडियम स्कूल। English medium school premises. Clap for him, all of you. Thank you. First of all, I introduce myself, Miss Salmira. We all know today is special day, which is called Independence Day. On this occasion, I have a great opportunity to speak about Independence Day. So please forgive me any mistake on this day. देश लाने इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, तब तक दिल में जान। Now start my speech. This year we are celebrating 79 Independence Day of our country. It is a special day for us all. On this day in 1947, India became free from British rule. Let us remember Prime Minister hoist the national flag at the Red Fort in New Delhi. The great freedom fighter who sacrificed their lives of our country, such as Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Lokmanya Gangadhar Tilak, etc. We pay tribute to our freedom fighter on this day. Proud to be an Indian. Let us promise to study, be good citizen, and help our country grow. Together we can make our India to be an Indian, and I love my country very much. Thank you. जय हिंद जय भारत। या किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना है तो ये जिंदगी किस काम की, ये जिंदगी किस काम की। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विद्या पटेल है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सभी आज हम यहाँ 15 अगस्त मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्वतंत्रता दिवस पर कुछ शब्द बोलूंगी। हर साल 15 अगस्त को हम अपने देश की आजादी की याद में यह पर्व मनाते हैं कि 1947 में इस दिन अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजादी मिली थी। यह आजादी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत वीरों ने अपना जीवन बलिदान किया। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी आजादी की कीमत समझनी चाहिए और अपने देश के लिए ईमानदारी, मेहनत और देशभक्ति से काम करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने भारत को और बेहतर बनाएं। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी है। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। Teacher, principal and all my dear friends, my name is Yashavan. I am studying 5th class. Today is the 15th August and this year we celebrating the 79th of the Independence Day. On this day is very important for us. We got freedom on 15th August 1947 from the British rule. Independence Day is the national greatest festival of the democracy. This day is proud of every Indian. On this day we remember our freedom fighters and hoist our national flag with pride and respect and sing national anthem. This date is the value of the freedom. I love and respect my country very much. जय जय भारत। फड़फड़े जय जयकार बोला, तिरंगी झेंडा फडफडे जय जयकार बोला। 15 ऑगस्ट आज आमचा भारत देश स्वतंत्र झाला। 15 ऑगस्ट आज आमचा भारत देश स्वतंत्र। सन्माननीय व्यासपीठावर गुरुजन वर्ग, सन्मान मुख्याध्यापक आणि बांधवांनो, सर्वांना माझा नमस्कार। माझे नाव शालिनी नितीन मोहिते। मी इयत्ता 6वी शिकते। आज मी तुमच्या समोर एक भाषण सादर करणार आहे। सर्वप्रथम सर्वांना माझ्याकडून स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। 15 ऑगस्ट हा आपला राष्ट्रीय सण आहे। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत ब्रिटिश राजवटीपासून मुक्त झाला आणि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनले। स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करतात। ज्या दिवशी देश स्वतंत्र झाला त्या दिवशी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लाल किल्ल्यावर ध्वज फडकावला आणि 21 ते 66 स्वातंत्र्य सैनिकांना
श्रद्धांजली वाहतात आणि राष्ट्रगीत गातात. चला आज आपण भारतीय एकत्र येऊया, चला आज आपण भारतीय एकत्र येऊया. त्याच्या सुपुत्रांमुळे आपण स्वतंत्रपणे श्वास घेत आहोत. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलसिता हमारा. Good morning everyone present here. Myself Hashita Haribai Bhure from class 10. Today I am just standing before you to represent some of my thoughts. Sometimes I think, why do we celebrate Independence Day? As usually, we get this independence as usually without any effort, struggle, hard work, etc. हम आजाद है, ये आजादी हम छीनने नहीं देंगे. हम आजाद है, ये आजादी हम छीनने नहीं देंगे. जो इस तिरंगे की ओर देखेगा उसकी आन बान शान छीनने नहीं देंगे. जो इस तिरंगे की ओर देखेगा उसकी आन बान शान छीनने नहीं देंगे. जो आंख उठाएगा इस तिरंगे की ओर उसकी आंखों को दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे. कभी कभी तो ये सुनकर मेरी रूह भी कांप जाती है. सोचती हूँ कैसे जीते होंगे वो बेटियां जिनको आसमान में उड़ने से पहले उनकी आसमान चला जाता होगा. कैसे जीती होगी वो बेटियां जिनको उड़ने से पहले उनका आसमान छीन जाता होगा. कैसे होती होगी औरतें जिनके सिंदूर की हर एक बूंद उस खून के साथ बह जाती होगी. अरे कैसे जीते होंगे उन पूरे माँ बाप जिनका सहारा उनकी छड़ी थी, अब तो वो छड़ी भी टूटने आई है. यस माय फ्रेंड्स, freedom is not a game. It's a very hard work. We have to give a lot of struggle for it. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. My name is Prithviraj Vijay Sutar and I am going to deliver a speech on Independence Day. Independence Day is celebrated on 15th August. We got freedom from British rule on 15th August 1947. All the freedom fighters who fought for our freedom are Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, etc. I am very proud to be an Indian. I love my country very much. Thank you so much. Next student is Akarsha from class 7. Akarsha, today is 15 August and I wish a very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of our country and this year we are celebrating 79 Independence Day. On 15 August 1947 we get independence from the British rule, so we celebrate Independence Day on 15 August. Many freedom fighters sacrificed their life to get freedom for India. Due to brave warriors, we are living peaceful life. We should be grateful to our freedom fighters. We feel proud to be an Indian. On this occasion, let us all pledge to our best, make our country the best country in the world. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Hello everyone, respected principal, ma'am, teachers and all my dear friends. My name is Anuja Patel and I am studying in 7th class. I am very happy to stand here and speak a few lines about Independence Day. We celebrate Independence Day on 15 August every year. On this day, 1947, our country got freedom from British rule. It's a very important day in the history of India. Our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru fought bravely to make India free. Because of their sacrifices, we are living in free and independent country today. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat. माननीय पदाचार्य जी और सभी अतिथिगण और मेरे प्रिय मित्रों को मेरा स्नेह और नमस्कार. मेरा नाम देवांशु दीपक शर्मा, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ. आज हम सब यहाँ अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं. 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास का स्मरणीय दिन है क्योंकि इस दिन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी. यह आजादी आसानी से नहीं मिली थी. इसमें कुछ महापुरुषों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ऐसे कई महान लोगों ने अपना बलिदान दिया था. जय हिंद, जय भारत. Good morning, all of you. My name is Shlok Gowda. I am studying in class 8. Today we are gathered here to celebrate our 79th Independence Day of India. 79th Independence Day of India. On that day, it is very important day for all of us. On that day, we will get freedom from British near about 150 years. Very special days for us. Many freedom fighters just like Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, etc. are struggle
hard for freedom. So as an Indian, we will respect our country, obeying elder, and make our country pride through an action. As a student, we will work hard for the future of our India. We are young, but we are future of our India. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mara. Principal ma'am, chairman ma'am, teachers and all my dear friends. My name is Swapnil Bhimrao. I am from class 8. Today we all are gathered here to celebrate the Independence Day. As we all know, our great freedom fighters give sacrifices of their life to get the independent India. The British Empire ruled the India for 150 years. In that 150 years, they did not treat the India neatly. So our great freedom fighters like Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev hangs on the rope. Mahatma Gandhi starts the war of non-violence, and many of them like Subhash Chandra Bose and Lal Bahadur Shastri, etc. This war of independence did not start from the 20th century but from the 17th century, when the British Empire starts to rule the India. In that period, the warriors like Rani Lakshmibai, Khans and Peshwa fight with them. But finally, after 150 years, we get the independence on 15 August 1947. This is the 79th year of the independent India. We should celebrate the Independence Day with a new energy. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shivrai. Thank you, Swapnil. Next student is Tanya Sharma from class 9. जहाँ वीरों ने बलिदान दिया वो प्यारा देश महान है, जहाँ वीरों ने बलिदान दिया वो प्यारा देश महान है, जहाँ तिरंगा लहराए वो भारत देश महान है, जहाँ तिरंगा लहराए वो भारत देश महान है. Respected principal, ma'am, teachers, parents and my dear friends, good morning and happy Independence Day. My name is Tanya Sharma from class 9. Today we gather to celebrate 79th Independence Day. Every year on 15 August we remember this historic day when our country became free from the British rule in 1947. We proud honor the sacrifice of our freedom fighter. They fought bravely, endured hardship, and our country became so that we could live in a free country. Today India is moving forward in every field: education, space research, sports, and more. But in the progress of we remember this. We remember this to our nation strong. Good morning, respected principal, chief guests, teachers, and all present here. My name is Arpita Singh Patel. I could study in class 7. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Today we celebrate 79th Independence Day of our great nation, India. We are gathered here to commemorate the day when India broke free from the shackles of British rule on August 15, 1947. This day is not just a holiday. This is a reminder of sacrifices made by our freedom fighters, great leaders like Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru, and there are more than 300 freedom fighters of India, and many others led the movement of India's independence. Their courage and dedication inspire us to this day. Let us all take pledge to work hard and make our India proud. Thank you. Once again.